बट बंगाली है तो शायद हमारे वश में आएगी नहीं आएगी, तो वो सारी पर्सपेक्टिव मेरी मॉम को ब्रेन वॉश कराई गई थी। I think Divesh, his bhaiya and his bhabhi, all three people fiercely protected me from everything. Yeah, she was like, तू इधर आई भी नहीं है, तू रहना भी नहीं चालू की है, but because of me, तू already bitch बन चुकी है. Hi guys! This is Vishaka and Divesh and welcome back to our story. Another video With another drama. यहाँ पे ड्रामा की कोई कमी नहीं है guys. Yes. ड्रामा तो हमारे लाइफ में इतना है कि बताते बताते थक जाएंगे. Yes, पर हम ड्रामा करते करते थकते नहीं है. There is a difference. Yes. So last episode में हमने क्या बताया था दिवेश? लास्ट एपिसोड में हमने ये बताया था कि कैसे हमने एक दूसरे की फैमिलीज में बता दिया था घर पे कि आई एम गोइंग टू मैरी हर, शी इज गोइंग टू मैरी मी. सो इसकी फैमिली में कैसे मैं एक्सेप्ट हो गया था या नहीं हो गया था, वो जानने के लिए लास्ट वीडियो देखो एंड देन कम बैक हियर and then watch this episode. Because ये episode में तो आपको पता ही है कि बिस्सू is still getting rejected. Yes. बिस्सू अभी तक accept हुई नहीं है. कैसे accept होगी या नहीं होगी ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं. But बिस्सू, as her t-shirt says, determined. I'm determined to make his family mine. कौन मुझे रिजेक्ट करेगा यार, मैं कितनी अच्छी हूँ. वर्ड प्ले. हाँ, तू वापस खो गया मेरे में. सच में खो गया ना. हाँ. यस. ऐसे ही चंगुल में कर लेती हूँ. काला जादू नहीं करूंगी, मेरे चंगुल में फंसाऊंगी. गोरा जादू करूंगी तेरे. Oh my God, racism in जादू also. Hesitate, ma'am. First of all, if you are enjoying these videos that we release and कुछ दिनों में हमने काफी सारे नए videos release किए as to what are these conversations that you need to have before you plan on getting married, all of those useful videos, if you really like all of those videos, please hit the subscribe button because that helps us create more content for you. And थोड़े पैसे भी कमा लेते हैं, but ठीक है. Having said that, this video is all about how Bissu is still getting rejected. अभी क्यों दुख में बैठी है? क्योंकि मैं बहुत रिजेक्ट हुई हूँ लाइफ में. नहीं हुई है कुछ भी तो रिजेक्ट. So how Bissu is getting rejected still, and how Divesh is determined to अपने प्यार के लिए लड़ रहा है बंदा. Yes, अप्रूव करवा के ही छोड़ूंगा इसको. अब हमने लास्ट वीडियो इस बात पे एंड किया था कि इसकी फैमिली में एक कांड हुआ था. इसकी फैमिली की नजरों में कांड है, हमारे लिए तो मतलब एक किस्सा है. एंड इस कांड के वजह से क्या असर हुआ था मेरे अप्रूवल प्रोसेस में, you know, as a bahu. So Divesh will take us through that incident or the event that had happened because of which it directly affected me. So I think the main reason was Bissu not getting accepted because there was already so close relative में, हमारे ही एक्सटेंडेड फैमिली में ऑलरेडी एक बंगाली और सिंधी वेडिंग हो चुकी थी और उसमें काफ़ी ड्रामे हुए थे. एट द सेम टाइम व्हेन आई प्रपोज्ड इन 2020, तो उसके 4 साल पहले वो शादी हो चुकी थी. वहीं से शुरू हुआ था ब्रेन वॉशिंग का सेशन विद माई मॉम एंड रिलेटिव्स. काफ़ी चीज़ें इधर से उधर की गई थी एंड इट वॉज नॉट अ गुड साइट टू सी दैट ड्रामा एंड ऑल. Sorry, to add to this, because I feel that in that particular scenario, सास और द बंगाली बहू उनकी वो भी एक इवेंट पे थे वेयर बोथ ऑफ देम हैड डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड वर नॉट बीइंग एबल टू गेट अलोंग प्रॉपरली. And but because these were, you know, close knit families, everybody knew everybody else's story. Yeah. So that in turn, those relatives sort of were trying to brainwash Divesh's mom that all Bengali girls are like that. Yeah. You know? Just because उनकी story एक तरीके से थी, एक तरीके से चली है, उनको नहीं जम रही कोई चीजें, तो वो सारी पर्सपेक्टिव मेरी मॉम को ब्रेन वॉश कराई गई थी क्योंकि वो स्टोरी सही से नहीं चली. तो आपकी अगर फ्यूचर वाइफ आने वाली है, दिवेश की फ्यूचर वाइफ बंगाली वाइफ आने वाली है, तो आप बच के रहना कि ये भी ऐसा ही ना हो जाए. तो माई मॉम वाज, यू नो, उनको डराया था मॉम को, ऐसी चीजें बताई गई थी कि देखो बंगाली लोग काला जादू करते हैं. But also to add here, the relative was actually saying all of those things. उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मतलब nobody actually did काला जादू with her. But just that वो preset notions है that, you know, stereotypical that all Bengali people must know काला जादू, you know. More than brainwashing, it was more of influencing your mom.
basically, right? My mom alone didn't have any issues with Bissu. Yeah, I think that was Has mostly to do influenced. with relatives only too, लोग क्या because कहेंगे, they are very चार लोग. habituated to marry in the same caste Sindhi तो but भले Sindhi में problem हो, कैसी भी wedding हो, but they are okay with it. But अगर intercaste हो तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे intercaste है, Bengali है, culture जमेगा नहीं जमेगा, and all that things were talked about and it was portrayed in a very different manner. Yeah. So that I had to intervene and explain my mom that all this is not true. This is just the societal norms and belief that they have, which is not true at all. So you focus on the facts that she's a nice girl. She's gonna be good luck. She's a nice girl. I love her. This is what it is important. Nothing else is important. बट उनके दिमाग में ये था कि सिंधी लड़की अगर घर पे आएगी तो एटलीस्ट बिकॉज दे आर सिंधी तो सिंधी में बात करके हम सिंधी बहू को वश में कर सकते हैं अपना बना सकते हैं. बट बंगाली है तो शायद हमारे वश में हो, आएगी नहीं आएगी. ऑल दैट थिंग वाज गोइंग इन दैट टाइम जस्ट बिकॉज हमारे फैमिली में इतने सारे ड्रामा चल रहे थे, इतने सारी नौटंकियां, इतने सारे झगड़े, इतने सारे इधर की बात उधर हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी. तो इस वजह से बिस्सू न्यू एवरीथिंग सिंस द स्टार्ट बिकॉज हमारे 4 साल का रिलेशन था. बट एट द सेम टाइम आई हैड टू अपोलोजाइज विथ हर बिकॉज वो अपनी साफ सुथरी लाइफ जो उनकी है, सिंपल लाइफ छोड़कर मेरी लाइफ में आ रही है तो इतना ड्रामा अपने आप में इन्वाइट कर रही है वो. बट उसकी कुछ गलती नहीं है. तो आई हैड टू अपोलोजाइज टू हर पहले से ही कि दिस इज व्हाट लाइफ इज गोइंग टू बी, बट आई विल मेक श्योर दैट कि ये ड्रामा तुझ तक ना पहुंचे. बट तुझे सुनने तो मिलेगा कि ये हो रहा है, इसने ये बोला, उसने तेरे बारे में ये बोला. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट लेट्स रिश्तेदारों ने काफी कुछ एक दूसरे के लिए कान भरते ही हैं, आपको तो पता ही है. सो वो चीजें हो गई थी. बट आई हैड टू मेक बिस्सू अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. बट वी डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस पार्ट. वी नीड टू ओनली फोकस ऑन द गुड पार्ट, फोकस ऑन आवर वेडिंग, फोकस ऑन आवर लाइफ एंड let's move on from there. So I think Divesh actually, what the promise that he actually gave me, he maintained that promise. He not only did protect me in the entire process, but he also protected his mom separately. I think I have to say this. A lot of credit goes to our bhaiya and bhabhi. Yes. Because they, saw their life, their marriage life is leading. So they much ahead prepared us what is going to come. So Divesh's bhaiya bhabhi is what the Bengali Sindhi marriage that happened 4 years ago. And there were a lot of problems created. If you want to know the entire story of theirs, we have mentioned their podcast link in our description. Yeah. You can go ahead and know their entire story in detail. Yes. They have a lot of teachings to give you guys, and that major teachings we've taken from them. Yes. So how to lead our lives, how to prioritize ourselves, a lot of lessons. How to prioritize your partner. We've learned so much from them, and these guys also have a beautiful story to tell you guys. So again, link in the description box, please check them out. And that is exactly why, because it was again like a Bengali bahu coming into a Sindhi family and all the problems and ruckus that it created, I think Divesh and his bhaiya and his bhabhi, all 3 people fiercely protected me from everything. Like they stood like a rock that Bissu को कुछ नहीं होना चाहिए because of his bhabhi. His bhabhi actually is very good connected to me. So she was like कि मैं तुझे अभी से ही sorry बोल रही हूँ, मेरे आने के बाद से बहुत रायता फैल गया है and there is a preset notion about you. But that awareness कि कि अब बिस्सू को भी problem हो सकती है. But वो word बताना जो तुझे भाभी ने बोला था, शोकी ने बोला था. Yeah, she was basically like that. तू इधर आई भी नहीं है, तू रहना भी नहीं चालू की है, तूने अपनी जिंदगी यहाँ पे शुरुआत भी नहीं की है, but because of me तो already bitch बन चुकी है. Yeah, so welcome. Because we both are Bengalis, so that preset notion was already in motion. Preset notion was already in motion. Yeah. Wow. I think that was the whole event which was being projected again कि ये problem तो पूरा वापस होने वाला है. Exactly why his mom was also taking it very difficultly कि पर मेरे family के साथ भी ऐसा कुछ होगा क्या, पर हम ठीक से रहेंगे क्या, पर ये लोग तो अलग रह रहे. I think a lot of the decision that we wanted to stay separately was also on the basis of how struggling his bhaiya bhabhi's relations were with the in-laws. In the beginning. And then eventually they also parted ways, but we wanted to avoid all
all of Yeah, that. since day one. Exactly why we always were clear that at least दूर रहेंगे तो रिश्ते maintained रहेंगे. Yeah. When you are living together, the tension, the possibility of a friction is so high, you know, because Devesh is coming from some else background, I am coming from another background, his mom is coming from another background. The friction possibility increases, and how to avoid all of that, we thought that we should focus on our happiness first, then take it forward, and then probably maintain those relationships that you Yeah. are meeting on. हम खुश रहेंगे तो अपने घर वालों को भी खुश रखेंगे. That's the first rule, guys. अगर आप खुश रहोगे तो ही आप दूसरों को खुश रख पाओगे. अगर आप नहीं खुश हो तो आप आजू बाजू किसी को भी खुश नहीं रख पाओगे. So that's the first rule जो मैंने दिवेश से सीखा था actually. I always thought that you should put your love before you. This is what my belief system was. But as and when we evolved in life, I realized that you should put yourself first to put your loved one, you know, beside you, not Yes. below you, but just beside you. But you have to love yourself first. Yeah. Thank you, Devesh, for making me learn this. Your inside happiness should be full. Then only you can fill anybody's else's cup full. Yeah. अगर आपका ही कप खाली है तो आप कैसे भर पाओगे उसकी खुशियाँ. ये भी मैंने आई थिंक कहीं से तो सीखा था. Yeah, but like you taught me that. So that was a good learning for me. Finally, Devesh apologized to me. I think Shoki also apologized to me. Yeah. Everybody apologized to me for what was coming, and I was very well pampered and protected. Yeah, I think because best of part them. was we were, you know, fully trained We were. by them. Yeah, we were for in a good way to maintain all the relationships, Yes. to be happier in life and to keep other people also happy I at the think same अगर time. वो लोग नहीं होते तो हम लोग जिस तरीके से ये चीज को डील करते it would have been very even more different. messier, even more haywire. तो It would जिस have been different is what आई थिंक डिफरेंट होता बट मेसियर भी होता क्योंकि हमको पता ही Probably. नहीं होता किस तरीके से हैंडल करना है और क्या बातें करनी है. Yeah. तो इट वाज लाइक वी वर वेरी, यू नो, हमको पता था कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें क्या रिपीट नहीं करना है अभी. Yeah, we learned from their mistakes, Yeah. as they say. Yeah. I then, as you know, we are rebel kids, so I became rebel and I told my mom that listen, you want us to be like good, right? So if you want this, our relation, mother and son relation, to maintain happily ever after, then you have to let me go and start a new life with my wife. So after all of this back and forth conversation, she finally agreed. Finally. And this is how Bisu was accepted. I knew that ये अगर accept हो जाता है तो इसके बाद सारी चीजें अच्छी होनी है, because मुझे पता था, मैं confident था अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो चलेगा, जो भी problems होगी मिलके solve करेंगे. अच्छा गाइस, हम रील को यहाँ लाए. If accept नहीं होता तो रिबेल किड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ ही लेते. चीजें जुगाड़ के बोल ही देते. जैसे ये वो इंसिडेंट तुझे याद है, इनको ऑडियंस को भी बता Which? देते कि अगर मुझे अकेले रहना है मेरी वाइफ के साथ, तो मम्मी मान नहीं रही थी. Yeah. तो मैंने मम्मी को क्या बोला, Dude, he actually said his mom कि मेरे को नंगा घूमना है घर पे. हाँ मतलब मुझे मुझे प्राइवेसी नंगा चाहिए. घूमना है तो तो मुझे- मुझे मेरी बीवी के साथ नंगा घूमना है. खत्म, Please don't imagine, guys. गया. इतना हद तक चला गया था अपनी मम्मी को कन्विंस करने के लिए कि भाई मेरी लाइफ है, मुझे जीने दो, उनके साथ नहीं रहना. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ ब्रेकअप कर रहा हूं मैं. In as many words you said this, right? या तो ये मैंने बोला कि मैं अपनी लाइफ लीड करना चाहता हूँ, अपनी मैरिड लाइफ हैप्पीली लीड करना चाहता हूँ. आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स. सो इसलिए मैं, क्योंकि मम्मी भी है घर पे, मेरी बहन भी है और बिस्सू भी है, तीनों अगर रहते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. अब मैं अगर तीनों को बैठ के समझते बैठूं Oh और yeah, there was समझाते बैठूं, Prerna also. I forgot only. Yeah, so he's younger. you know 3 women are there in the family. I'm only the male person. तो मैं किसको समझूं, किसको समझाऊं, किसका सुनूं? I can't handle. Rather I handle only one person and I keep those 2 women happy. उनको मैं every interval फोन करते रहता हूँ, उनके हालचाल पूछता रहता हूँ. They are also nice to me. I am also nice to But- them. So the relation is maintained. But you know, today. Cut to 2024. Today his mom is my biggest cheerleader, बोल Yes. सकते हैं. मुझे She's फोन करके बोलती है constantly- यार कि Yeah. तू कितना लकी है, तेरे को बिस्सू जैसी वाइफ मिली है. उसके आने के बाद तेरी लाइफ में कितनी सारी चीजें बदली है. यू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, यू बिकम अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर, तेरे को अवार्ड मिल रहे हैं, तेरे को बिलबोर्ड पे आ रहा है. तू ये सब किसकी वजह से हो रहा है? बिस्सू की वजह से हो रहा है. आई मीन दैट वुमन. Who took so much time to get convinced Yeah. is right now
फैन गर्लिंग फैन गर्लिंग हर, अभी फोन उठाते ही रखते ही बोलती है लव यू, she screams by the way. या लव यू बोल, love लव यू नहीं बोला तो वापस फोन करेगी, लव यू क्यों नहीं बोला, लव यू कैसे नहीं बोला. सो द ट्रांजिशन Yeah, that has so happened. that transition has happened, and we'll tell you some other time how did that take place. Yeah. The entire thing. But today she is the sweetest person, and I think she at times his younger sister प्रेरणा उसको भी सुनाती है कि बिस्सू देख कितनी अच्छी तू क्या कर रही है लाइफ में. So I feel bad for प्रेरणा and I tell her Yeah. sorry कि sorry guys. बट इन सबके बीच में गाइस देयर वाज फ्यू पीपल, हमारे रिश्तेदार जो खुश नहीं थे, लेकिन मम्मी मान गई थी बिस्सू के लिए. लेकिन देयर वर सम पीपल इन द फैमिली हु वर नॉट एक्सेप्टिंग. उसके बाद हुआ क्या, बता, और ड्रामा बता तू. So, ऐसा एलिगेशन लगाया था कि बंगालन जो है वो काला जादू करती है. बट लिटिल डिड वी नो कि हम पे ही काला जादू हो गया था गाइस. वी वर एक्चुअली विक्टिम्स ऑफ ब्लैक मैजिक. Yes, we were. And this is a story for the next episode. This is a very interesting story to know. So- Please stay tuned. What was the best part about this video? Give it in the comments and like this video, share this video, subscribe for the next Kala Jadoo episode. Yes, Thank it's you. worth it. Okay, bye. Bye.